Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unity of Thought is proudly presented English Fluency Course by Sir Ijaz Ahmed. I'm really happy to introduce that Sir Ijaz is here, and I will want to invite सर प्लीज़ आप आएँ और हमें बताएं कि हम किस तरीके से इंग्लिश की ऐसी लैंग्वेज को समझें और इसको सीख सकते हैं. एज ए स्टूडेंट मैं भी यहाँ पे आपके साथ हूँ. Okay, no problem. No problem at all. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Okay. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. And in this modern period, right, because if I talk about the communication power, let's suppose I'll start from this word, communication, influence, right? And the communication influence is just, only the one language is hemming over here. And I think, without any doubt, we can say the language of English language. And the people around the world, just worldwide, wherever you want to go, you'll see the people, and you'll see the people mostly talking in English, right? If you wanna express, if you wanna say something, if you wanna communicate with other persons, if you wanna interact with the people of foreign countries, like any people in the world, right? Sometime this thing happen over here. Suppose if you go to South Korea and meet the Korean, and they don't know about your native language, Urdu or Punjabi, and you also don't know their language, right? Korean language. But at the moment, one thing which is very positive for you, especially because you know language and the Korean person also knows language. When you both want to talk to one another, to each other, you definitely you'll talk in English. And this is the very key thing. And if suppose you haven't proper understanding of English language, and you go any country of the world and you can't talk with the other people of the world, right? Because it's a big problem to you. Definitely, it's a big problem for all the time for you, especially in case of not communicating properly with the person of the world. So the thing is that having a proper understanding and having a very good communication skills of English language, right, give you a lot of comfort while traveling, right, to the foreign countries, while just meeting with the foreigners who are native speakers of English language, and also the other non-native speakers even, and all the, because it's a lingua franca. English language is a lingua franca, the big term I'm just speaking over here, telling you over here. Lingua franca, the language which becomes internationally recognized in all the countries of the world. They just talk in English. Even you can't, you can say from 9th century to 16th century. I just want to tell you a little bit of history of lingua franca term. Arabic language is a lingua franca. Why? Because at the moment, the Arabic people were financially very strong, and they have very strong impact on economy, right? And financially and internationally, they are well organized and they are well reputed about their financial status or about their economics or about their trade, especially in trade. They were very strong and stronger than any other nation of the world at the moment. So, from 9th century to 16th century, Arabic language was lingua franca. And you can say that here, why they are? Because they are financially very strong. Their impact of economy were higher than any other country of the world at the moment.
But the downfall of Arab countries in the field of trade and other fields like you can say that their finance when they got downtrodden, and ultimately what happened, the result is right now in front of you. When European countries became financially very strong in business in each and every department of trade, they got influence due to the what was the medium of those European countries? Only English, and English then became a lingua franca. Arabic remains for 7 centuries lingua franca, but now English has been a lingua franca for the last couple of centuries, right? And still, it's behind the Arabic language because inshallah will be Arabic would be inshallah ahead of this language later on. But right now, English is a lingua franca. Why? Because they are financially stronger than the other countries of the world. So we must learn right now the language, and it has become a lingua franca internationally. If you want to do the business, if you want to do online trade, right, if you want to talk to other native speaker of English countries, how you can talk, how you can do the business, right, only this is the biggest medium. So English is very important, I just want to tell you. And the question is, next question is going to tell you it's the importance. I want to tell you it's very important and internationally very well accepted, well reputed, and well organized. Why? Because it has become a lingua franca now, right now. So I just want to tell you why it's very important, right, for us to learn. Very simple. If you want to talk, if you want to deliver, if you want to sell anything in the world, across the world, worldwide, if you want to do the business, you need to communicate, right? You need to communicate. And the question is that over how you can communicate with other people of the world only through English language. But now I want to just tell you the language which we speak, like very simple language. Mostly people, because I've been teaching for the last 20 years, over 20 years experience of teaching English language. Many people just say me here, oh, I will know English, but they don't know. They just say, why we can speak English. What language they speak? Only this one. What's your name? Where do you live? What's your hobby, right? And these type of simple questions, they answer. They say that they can speak English, but this is not a language, right? I wanna say you, language is that when you can explain each and everything in detail, right, according to the situation in front of any other person, whether you are on the stage, whether you are comparing in any of the function, like, and whether you are in front of hundred thousands or millions of the people, if you are talking fluently, this is a language. Language isn't that when you are saying what's your name, where do you live, what's your problem, what's your favorite color, what's your hobby. This is not a language. I just say it. It's a just simply simple question answer. If you memorize the 50 to 100 questions, you can talk these type of sentences very easily. But if you want to explain the things, if you want to market, if you want to market at international level, you can only market through this medium of English language. And marketing requires your strong communication skills, your good skill in English language. This is the key thing. So I want to just tell you about English language. In my English language course, it would be 3 months, right? And I'll teach you, inshallah, more than 70 English grammar rules in this course, and almost 3,000 English words, vocabulary, 3,000 English words. But definitely you learn from here. You learn from here. And this is very important. My course
for 3 months. In short, I just want to tell you, in it you learn more than 70 English grammar rules, right? And 3,000 English words, including 1,000 English verbs with 5 forms. And there would be the more than 40 conversations on different topics, right? From beginning at beginner level, even greetings, and from then next topics would be over there, and this would be a very effective for you for your better communication. And also there would be the presentations, especially each student who will learn English language from me has to present uh, almost 25 presentations during this course. And this is just for the students who want to make themselves better in their communications, right? And if you are uh, being, if you will be connected with us a longer time, you will learn more and more. And this is a very short introduction of my course for 3 months. And one thing very important I'm going to tell you here, the biggest tip to learn English language, because I've written almost 100 tips of learning English language. But in this orientation class, I just want to tell you the first tip to learn English language. The first tip is the effortless way to learn English language is just listening. As I'm just speaking English with you over here, I'm speaking very slowly. When I talk in English with very fast pace, might be some of the students just getting the problem to understand me. I'm talking, right? But I'm talking with a very slowly, right? So listening, I want to tell you here, listening is an effortless way to learn English language. Because, when a newly born baby comes in this world, we haven't any proper institution for this child to learn the language, right? Where he or she's born. Like if he or she's born in Pakistan, definitely in Punjab, he'll learn the Punjabi. And if he or she is born in any English country, he'll speak definitely English language because this is his native language. So if newly born baby, this is the biggest example over here, is having, have no proper teacher, right? Even the newly born baby, you can see here, you can observe by yourself, newly born baby has no power, even to touch the book, has no power to pick up the pencil, has no power to pick up any other tool which assist us in case of just learning process, right? So even the baby has hasn't any type of, you can say that, tool, any type of item in front of us to learn language like whiteboard, which we have for the classes. We have no proper teacher to teach him or her the language where he or she is born. He or she is totally helpless, right? But only one thing the babies do. What? They listen. They listen very carefully, right? Only listening. And the baby listen. While listening, the baby observes each and everything. And in first year, baby starts speaking one word, right? Or two word after listening. Some babies are very fast and they speak almost 3, 4, 5, 6 words in a first year, but in second year, the baby
becomes able to speak more than one or two sentences even. And after 3 years, right, 3.5 years, baby speaks properly the language, right? And after 4 years or 5 years, he is expert in his native language. And what was the tool for him there? Only listening. He listens and learn, and he listens and performs even. So listening is an effortless way to learn English language. This is the biggest tip out of 100. I am telling you here. The first thing, if you have the things in your mind, if you can follow me over here, this is the real way to learn language, listening. And here being a teacher of language, I observed many times many students, they claimed to have the perfection in their talk and their communication, but they hadn't. Why? Because they have no, you can say that, proper understanding of listening. They don't try to listen. Even the sometime many students I observe that can talk in English, but only the sentences which they are speaking only with a very simple ways. Why they are speaking this type of sentence? By speaking this type of sentences, because they have listened the people who are native speakers, right, and who are the people who are big scholars. They didn't listen the talk of that people, right? So I want to tell you here, listening is very important. Listen more and more on daily basis, right? And just try, when you listen, try to speak. As I'm speaking here, I'm talking with you over here, as I'm just delivering my lecture over here, where I'm putting my stress, just listen very carefully. Listening gives you a lot of things, right? And many students just uh, pay put more attention, right, on their reading, on their writing, right? But they don't listen. And you must listen to things. After listening, you can improve yourself a bit faster than other person of the world, right? So this is my, you can say that I'm just talking with you the things, sharing with you over here about the tip, listening tip. It's my long experience. You can say that. Uh, what can I say that over here? It's my personal experience, right? Personal experience. Listening is gives you a lot of things, right? So listen more and learn more. That's the very best thing for you, especially in case of being a student of learner. Become a good listener. If you're a good listener, you are a good speaker, right? So listening is very important. If anybody want to ask any question from me here, he or she can ask. I didn't get it what you said. Can you please repeat it once again, please? Sorry? I am unable to get it what you said. Could you please repeat it once again so that I can answer? Sorry, please tell me again. I couldn't follow what you're saying over here. Please say it again because there was a noise problem over here. Yes, absolutely. It could be from my side as well because my mic is not working well. So I was just saying, like, actually, I didn't hear what you said. And for that very reason, I'm unable to get what actually the people have to say. So could you please repeat yourself so that I can answer, the other people can answer what actually you want to listen from us? Your voice is just splashing. I couldn't understand you properly. Might be the internet problem, signal problem over there. If anyone have classmates, could you please speak to them, Ijaz, sir? Because I personally believe that my internet is fluctuating as intermittent, and there might be the mic problem as well with my phone. So, is there anyone that who has understood me, and could you please repeat it to them?
Hannah, are you there? Da- you say it again. Might be. You say it जी again. Tasim, Tasim, can you translate for in Urdu for No, me? no, 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 no. Okay, no problem. Just no, no, no. Just say it again in English. No problem. But Uh, okay. There is nothing to say. I was just saying that I didn't hear what you were saying. So could you please repeat it so that we can ask you? You said like if you have any if any person had any kind of a question, but related to what I missed that. So could you please let me know? We have to pose a question to you related to what? This is what I might okay, actually. you can ask from me. You wanna say me here what type of question you should ask from me. This is your That's badly. This is anyway. Please you carry on. So no, let me get you wanna there. say me here that what type of question you should ask from me. No, this is not the party that I was asking. Anyway, Oh, please just you go on, please. Just carry on the lecture. I just deviated it somewhere let's else. carry on. No problem. But your voice is just I I just said is that there's a problem with my mic, and that's the reason that oh you're not able to get me my clearly. problem. Just please settle it down over there so that I can hear you properly. I can answer you what you're Yeah, saying me sure, here. no problem. Thank you. Okay, ma'am, you can tell me if you're listening. Hello. जी सर Ijaz. What's the problem over there? Ma'am is asking a question from me here, but I'm not able to understand what she's saying to me here because voice is not clear. That's why I was eager to listen her as well in Urdu, as our national language is also very important. और मुझे तो खुद इंग्लिश को इस तरह से सीखना है कि हम कन्वर्सेशन में ना एक दूसरे को सुन भी अगर सुन रहे हैं तो समझ भी पाए। होता पता है क्या है कि दो लोग समझते हैं कि हम दोनों को इंग्लिश आती है, लेकिन वो दोनों आपस में बात नहीं कर सकते कि इतना डिफरेंस होता है ना। इवन मेरी अपनी जो अदायगी है वो दुरुस्त नहीं होती अक्सर अल्फाज के। तो जी नहीं मैं ये चाह रहा हूँ मैं से जो मैम बोल रही हैं जो मैम कह रही हैं उनको मैं जैसे मुझे उनकी ना आवाज सही नहीं आ रही नहीं नहीं क्लियर। सर, ने कहा आप देखें, तौसीन से मेरी अक्सर बातचीत होती है माशाल्लाह, मैंने अक्सर उनकी तारीफ भी की है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उर्दू में भी मेरे साथ जरा बात करें ताकि हम समझ तो पाएं कि वो असल में क्या बात कर रही हैं। बेसिकली बात ये होगी कि इजाज साहब ने कहा कि अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे हमसे तो पूछ लीजिए, राइट? सो मैं यही वो दोहराना मैं यही पूछ रही थी कि हमें क्या पूछना है आपसे, क्योंकि मैंने वो थोड़ा बीच वही ना और नोटिस मैंने किया। आपसे यही कहा ना मेरी बात सुने मैंने भी तो यही कहा कि आपका सवाल यह है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी शुड आस्क फ्रॉम यू। ये साफ तो यही तो अगर मैंने आपको ये कहा कि आप जो चाह रहे हैं कि मुझसे कहना कि हमें किस तरह का सवाल आपसे पूछना चाहिए। ये उसमें ये साफ मैंने कहा था कि यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी अबाउट माय कोर्स outlines, right? ओके। My English words and also about listening, the effortless way to learn English language, right? I just put this in front of you. This is the biggest tip to learn English language internationally. I just give you example of the child, newly born baby here. We have no proper instructor for that baby who's in the world. तो सो मैंने कहा इस तरह कुछ सवाल आपके माइंड में आए कि सर ये इसको कैसे हम लॉजिक दें, मुझे इस चीज़ का दें इस चीज़ का दें सिलेबस के वाले से, उसके बाद कुछ और कोई लिसनिंग के वाले से कोई सब ऐसा क्वेश्चन। तो वही मैंने आपको वो मैंने आपको बता दिया था कि आप ये कह रहे हैं कि हमें किस तरह का सवाल पूछना चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी शुड आस्क फ्रॉम यू, यही था ना राइट। आपका। तो ये मैंने साफ। यही तो बात कही आपसे, तो आपने शायद Yes, फिर आगे but मेरा सवाल my समझ। my connotation was something else before this. So this is the reason that I myself get confused. This is why I stopped. Like I mean, You maybe no I, need to you no need to get confused. No problem at all. You are yeah, also very good yeah. in Thank you your very much talk. for Your communication is very well because from where you are, just please let me know. I'm from Kashmir, from India. Kashmir. Right.
From India? Yes, absolutely. Okay, no, but you're by born from there, or you have just spent much of time over in any abroad country? No, this is all just because of the listening, as you were mentioning before. I'm very much fond of learning the languages, and my majors That's a were. very key thing. That definitely sure you must learn because your accent is very good. I really appreciate you here. Your accent is good, but everybody must learn. Everybody doesn't leave the learning process, but because if we stop ourselves, it means we have eradicated in our personality the student, right? We must be a student, learn all the time. This is the key thing. So getting the things done over here, that's good. Your effort, I really appreciate you being a language instructor here because I'm a English language instructor here in Gujarat City and also IELTS tutor, right? And Duolingo, PT, Pearson test of English. All this thing I'm teaching here. Okay, your teacher? I used to be as an assistant professor in college, but on contract. Then I left it. We all want to go, so this is the reason I left it. My major was in phonetics and phonology, which was my favorite subject, but I have to lift that just because there was no any scope in colleges for the contractors, so I had to lift that. And then after Okay, I moved. okay, just tell me, you've joined this class over here, and what was the purpose of you joining here? Obviously, you're the instructor, and I have to learn. It isn't like that I have learned, and my boundaries are limited. No, you are the instructor as well, so you know it very well. You are making the other people to learn about the IELTS, and I have yet not been through the IELTS. So I'm very much fond about the learning IELTS. So this is the reason I have no. It isn't like that I have make my boundaries. No, I know this rating and I shouldn't go. No, you are the instructor, so that's straight obvious. I will learn it with You you. wanna do an IELTS? This was Yes, your purpose. yes, absolutely. This is my purpose to do IELTS, but I'm absolutely running out of time. I do not have time a bit. This is the reason that I have stopped myself. This is one of my dreams that you have to accomplish here. And among them, Alhamdulillah, my What was the reason behind your not accomplishing this one? Uh, there are some kind of my family background, from my family terms, and I some kinds of exigencies, family exigencies, and as well my some of the The brave people fights against the storms. You are very yes, strong lady. absolutely. You look very strong, stronger even, and you must do this one. Don't Definitely, there will leave. be time when I'll go for this as well, inshallah. But I Ah, believe that definitely, sure, if definitely, we sure, start the definitely. conversation, Sure. It's your right. uh, It's your right. It's your right. right, Don't. and It's your right to learn more and more. Right. yes, It's inshallah, your that's right. why I'm here. Like you are right now a teacher of ours, so I'm going to. How old are you? How old are you? I'm in a 30s, 30s. right? Okay, that's good. No problem. So And I believe that there are plenty of you no need to stop your learning, right? Just do it all the time. I'm here. This was the class of spoken English class, right? And IELTS, there's a big difference between IELTS and spoken English class. In Mhm, IELTS, totally it's a student centered, and mhm. spoken is only the teacher centered. Teacher will instruct you, guide you, speak with you, right, all the time, and you learn a lot of things. And in IELTS, only you have to do the activities, the tasks like speaking, writing, listening, right? These were the four modules. You'll have to do this one. Got it? Got it what I'm saying here? Yes, Yes, Ijaz, the active members like Tosim is really very precious for our platform Unity of Thought, and she is really real gem and English enthusiastic learner. और अक्सर ग्रुप में बहुत एक्टिव रहती हैं माशाल्लाह। मेरी इनसे पर्सनल में भी बात हुई तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो लोग जो माशाल्लाह किसी लिहाज से इतने काबिल हैं वो भी एज ए लर्नर हमसे जुड़े हुए हैं।
और यहाँ पे मैं चाहूंगी कि मारिया का एक चैट में जो क्वेश्चन है वो जरूर एड्रेस करूं, और आप समझें कि ज्यादातर लोगों का, या यूं समझें कि मेरा भी यही क्वेश्चन होगा कि इफ वी डोंट स्पीक इंग्लिश एंड अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड देन व्हाट टू डू। ओके। और इसके बाद दाऊद बिन इमरान का एक क्वेश्चन जो कोर्स से रिलेटेड है उसको हम आंसर कर लेंगे। नहीं नहीं, अगर तो सर आप इजाज काइंडली देखिए। मुझे आप सवाल अपना बताइएगा दोबारा। आपका सवाल क्या है आपका? सर मारिया ये पूछ रही हैं कि अगर हम इंग्लिश हाँ नहीं बोल सकते और इवन हमें एक लफ्ज समझ नहीं आ रहा, तो वो बिल्कुल, जो बिगनर्स हैं वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। मेरे जैसे जो लोग हैं ना, वो तो चाहे गलत इंग्लिश बोल के भी ना कहते हैं चलो जाने दो, कोई बात नहीं, ट्राई करना है बोल दो बस। नहीं लेकिन नहीं, बहुत सारे देखिए लोग मेरी बोल ही बात नहीं पाते। सुनिए, इसका जवाब देता हूँ मैं आपको। इसका जवाब ये है कि जितने बच्चे बैठे हैं इस ग्रुप के अंदर जो लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, लैंग्वेज एक स्किल है। पहली बात ये माइंड में रखो सारे बच्चे। लैंग्वेज क्या है? स्किल है, स्किल। ये स्किल है, इसको सिखाने वाले जो टीचर नहीं, वो इंस्ट्रक्टर होते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा इंस्ट्रक्टर नहीं मिला, आपको अच्छा गाइड करने वाला नहीं मिला, तो फिर आप कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे। ठीक है, यहाँ हमारे जो ट्यूटर्स टीचिंग कर रहे हैं, लैंग्वेज सिखा रहे हैं, उनका देखिए आप लहजा, उनका पढ़ाने का अंदाज, उनके ग्रामर के ऊपर ग्रिप। ठीक है, उनकी अपनी जो फंडामेंटल्स होते हैं लैंग्वेज के, लाइक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर हो गया, मॉर्फोलॉजिकल नॉलेज उनका देखना पड़ता है, उसके बाद डिस्कोर्स एनालिसिस देखना पड़ता है। ठीक है, उस देयर आर मेनी थिंग्स। तो वो जो चीज है कि आप, जो इंस्ट्रक्टर आपका अगर आपको अच्छा गाइड करेगा, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े ना, फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे सामने कोई बंदा अनपढ़ भी ले आए जो कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं उसको भी अंग्रेजी बुलवा दूंगा। कैसे? क्योंकि एक टेक्निक है। लैंग्वेज एक टेक्निक से सिखानी होती है। ये ऐसा नहीं होता कि मुझे लैंग्वेज आती है, मैं ट्यूटर हूँ तो मैं लैंग्वेज सिखा रहा हूँ, मैम इंग्लिश कर गया, मैम फिर इंग्लिश कर गया, या मैं इंग्लैंड में रह रहा हूँ, मैं अंग्रेजी बोल, मैं इंग्लिश पढ़ा दूंगा। ऐसा नहीं होता, ये गलत सारा। जो बंदा अंग्रेजी बोल भी सकता है ना, ये भी बात यार, जो बंदा इंग्लिश बोल सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई सा बंदा जो इंग्लिश अच्छी बोलता है, वो एक अच्छा ट्यूटर नहीं मान सकता, अच्छा इंस्ट्रक्टर नहीं मान सकता लैंग्वेज का। अब मैं आपको एक लफ्ज फॉर एग्जाम्पल सिखाऊंगा, तो ये एक लफ्ज में ही आपने इतने लफ्ज सीखे, अगर हाँ हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। जब अगर आप कोर्स शुरू करेंगे मेरे साथ, तो मैं आपको, जब शुरू करूंगा तो मैं आपको उस लेवल से शुरू करूंगा कि आपने खुद ही कहना कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। ये जो कॉन्फिडेंस लूज करते हैं बच्चे, वो ट्यूटर की मिस्टेक्स होती है, इंस्ट्रक्टर मिस्टेक्स है। वो इंस्ट्रक्टर अच्छा नहीं होता। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ लग रहा है, इंग्लिश का एक लफ्ज का भी नहीं आइडिया हो रहा, तो उसमें भी इंस्ट्रक्टर का कसूर है कि आपके साथ इंस्ट्रक्टर जो है बात किस तरह कर रहा है, वो समझा किस तरह रहा है। हमने अपनी लैंग्वेज, हमारी उर्दू है, पंजाबी है, इधर से हमने अंग्रेजी की तरफ जाना है, तो दैट्स वेरी गुड। ये बड़ी हेल्पफुल होती है, हमारी मदर टंग जो होती है। तो आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें इतना इशू नहीं है। ये मैं समझ, ये जो ना, ये बड़ा प्रॉब्लम, कोई लफ्ज समझ नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा, हम कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, वो सिर्फ सिर्फ टीचर का फॉल्ट होता है मेरे नजरिए के मुताबिक। बाकी पता नहीं, हर बंदे का अपना नजरिया, लेकिन मेरा नजरिया कि इंग्लिश का, लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज का जो वो इंस्ट्रक्टर होता है, उसे इंस्ट्रक्टर अच्छा बनना चाहिए। पहले वो स्टडी करनी चाहिए, लेक्चर तैयार करना चाहिए, बच्चों को पढ़वाना चाहिए। जी। जैसे आई टोटली एग्री। मैं बिल्कुल ये समझती हूँ कि इंस्ट्रक्टर के अंदर ये काबिलियत होती है कि हाँ, वो अपनी क्लास में मौजूद सब बच्चों को जो है ना वो अहम बना देते हैं, चाहे कोई बिगनर लेवल मैं पे मैं कोई। मैं मैम, आप मुझे वो बच्ची दे जिसने स्कूल भी नहीं गई, उसको मैं लैंग्वेज सिखाऊं। सर एक और जैसे क्वेश्चन आप ले लें मेरा, कि आपने भी हाँ, कहा कि अनपढ़ अनपढ़ शख्स को भी आप सिखा सकते हैं, लेकिन वो शख्स जिसने गलत पढ़ा हुआ हो उसको ठीक करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है क्या? हमारी गलत इंग्लिश को ठीक नहीं, करना हमारे तो उसकी मदर टाइम। मेरी बात मैं बताता हूँ। हमारा ना यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये चल रहा है कि लोग कुछ पता करते हैं, हमने एक्सेंट सीखना है, आई वांट स्पीक लाइक ब्रिटिश पीपल। लोग कहते हैं हमने ब्रिटिश की तरह बोलना है, अमेरिकन की तरह बोलना है, हमारा एक्सेंट उस तरह होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छा होना चाहिए। ये इसके ऊपर लोगों का फोकस आ चुका है मोस्टली, अब मैंने ऑब्जर्व किया काफी लोग। लेकिन आपको चाहिए कि आप जो हैं अपना जो है ना, जरा बात समझिएगा, अपनी फ्लुएंसी के ऊपर फोकस करें आप। अगर एक बच्चे ने गलत सीखा हुआ है, गलत लफ्ज बोल रहा है, अगर वो बोल रहा है तो वो अच्छा कर रहा है, चाहे गलत ही बोल रहा है, हम गोरा भी समझ जाते हैं बंदा क्या बात कर रहा है। ठीक है, मकसद ये होता है कि देखना है कि हमारा को पंजाबी लर्नर हो, पंजाबी सीख रहा हो, हमारे सामने को पंजाबी का लफ्ज गलत बोलेगा, अच्छा प्रोनाउंस नहीं करेगा, तो क्या मुझे कहेगा यार तेरा लफ्ज अच्छा नहीं है, हम कहेंगे हमें समझ लगे हो, आप यूर गुड, अब सही कह रहे, ऐसा ही।
उसमें ये था हम फ्लुएंसी के ऊपर जोर दें, रादर देन कि हम प्रोनाउंसिएशन पे जाएं, एक्सेंट पे जाएं। एक लंबा प्रोसेस है एक्सेंट सीखना, इसके लिए टाइम देना पड़ता है, सुनना पड़ता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये एक्सेंट को ऐसे नहीं आता ना, एक्सेंट तो एक दो चार दिन का काम नहीं है ये वाला। फ्लुएंसी जो ना, फ्लुएंसी के ऊपर बच्चे फोकस करें। जी सर, बिल्कुल। जिस कंफ्यूज तरह से आपकी आपकी मेरी बात भी हुई थी कि आइट्स अगर कोई अच्छा एक फास्ट लर्नर है ना, तो उसके लिए 2 महीने भी काफी हैं। लेकिन स्पोकन के महीना लिए, भी काफी। एक स्पोकन कोर्स के लिए आप चाहते हैं कि 3 मंथ लाजमी, एक कोर्स जो आपने बनाया है वो थ्री स्पोकन मंथ मुश्किल है ना, लाजमी है। जी। स्पोकन स्पोकन इंग्लिश करना मुश्किल है। उसमें क्या मुश्किल है, उसमें टीचर सेंटर्ड है, टीचर ने इंस्ट्रक्शन देनी है अच्छी, टीचर ने पढ़ाना है। आर्ट्स के अंदर टिप्स एंड टेक्निक्स एंड ट्रिक्स हैं, बताने हैं, बच्चे ने हल कर देना है, बात खत्म। टीचर का इतना काम ही नहीं होता। टीचर का सिर्फ यही काम होता है, बेचारा ये कीवर्ड्स हैं इनको फॉलो करो, ठीक है, ये एडजेक्टिव्स हैं, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, यहाँ से आपने ये लफ्ज निकालना है, इधर से आपने ऐसे हल करना है। तो उसमें ये प्रॉपर ये चीज नहीं होती कि हम आयल्स के अंदर जो हमारा होता है ना, स्पेशली वो कीवर्ड्स के ऊपर फोकस होता है सारा। तो स्पोकन इंग्लिश जो होती है ना, वो कीवर्ड्स के ऊपर बेस नहीं करती, वो बेस करे तो बच्चे ने बुलवाने हैं हमने उसको। आयल्स के अंदर जो है स्पीकिंग सेक्शन है वो सिर्फ 14 मिनट्स का है। कितने मिनट्स का है? 14 मिनट्स का। 14 मिनट्स की टॉक के लिए बच्चे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, और उसके लिए फिर एक मटेरियल जो होता है वो सिलेक्टेड मटेरियल पड़ा हुआ है, ऑनलाइन भी आप देख ले, वो मटेरियल पड़ा हुआ है। तो वो जो सिलेक्टेड मटेरियल बच्चे तैयार करते हैं, वो क्वेश्चन तैयार करते हैं, वो आंसर कर देते हैं, तो जाके आइल्स के टेस्ट पे, स्पीकिंग के टेस्ट की बात कर रहा हूँ। 4 मॉड्यूल है ना आइल्स के, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। तो स्पीकिंग है जो 14 मिनट का वो टेस्ट होता है सिर्फ। तो देखिए हमारे पर इंग्लिश कोर्स करता है बच्चा, उसने 14 मिनट से नहीं बोलना, उसने 14 घंटे इंग्लिश बोलनी है, ठीक है ना। मतलब कि जो स्पोकन कोर्स आप जो लॉन्च कर रहे हैं हम यूनिटी ऑफ थॉट प्लेटफॉर्म से, वहां पर एक स्टूडेंट का जो है वो यानी कि बहुत ज्यादा यूज होगा इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, जबकि आर्ट्स की तैयारी के लिए चूंकि नहीं नहीं नहीं, आप कैसी भाई, ये ना स्पीकिंग के लिए नहीं होगा, उसकी राइटिंग भी हम्म। अच्छी होगी, उसकी ग्रामर अच्छी होगी, उसकी रीडिंग अच्छी होगी, सही। उसके उसको और सारी चीजें मिलेगी। आर्ट्स में तो ये चीजें नहीं मिलेगी। आर्ट्स में तो आपको सिर्फ ये मिलेगा कि टिप्स सीखो, आर्ट्स हल करो, टास्क करो, मार्क्स लो, जी पास करो, बस बैंड लो, बस इतना ही। सर, इंशाल्लाह ग्रुप में आउटलाइन भी हम शेयर कर देंगे पीडीएफ की सूरत में। और यहाँ पे दाऊद बिन इमरान ने ये पूछा है कि मेंशन द फी स्ट्रक्चर, एज ग्रुप एंड क्लास टाइमिंग। फी स्ट्रक्चर में बता दूं कि ये 30,000 का हमारा फुल कोर्स है। 10,000 मंथली फी है, लेकिन वन टाइम इंस्टॉलमेंट में 25,000 में इंशाल्लाह आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। और सर एज ग्रुप का आप बताएंगे कि हम किस एज से ले सकते हैं स्टूडेंट्स, और क्लास टाइमिंग क्या? टाइम जो है ना वो 9 ओ जो ना 9 PM, दैट्स गुड। और सर ड्यूरेशन कितना होगा क्लास का? टाइम यानी कि कितने मिनट की ये क्लास डिपेंड होगी? ये डिपेंड करता है स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर हमारे ठीक पास सर। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास थोड़े हैं तो फिर हम क्लास का टाइम थोड़ा रखेंगे, वरना स्टैंडर्ड जो टाइम होता है ना वो 1.5 और 2 आवर्स होता है बस। सही सही, यानी कि कम से कम 1.5-2 घंटे की एक क्लास हुआ करेगी। हाँ, जाहिर बात है, हमने जो 3 मंथ में। स्टैंडर्ड जो हम्म। पहले क्लासेस मैंने पढ़ाई है ना, मेरा बैच होता है मैक्सिमम, जो मैं क्लास पढ़ाता हूँ तो मैं पढ़ाता हूँ 15 स्टूडेंट्स की, 15, उसमें 2 आवर्स होते हैं, सही। तो नंबर ठीक ऑफ है। स्टूडेंट 2 आवर्स कम तो होंगे क्लास तो होनी है, टाइम उसमें मैंने ड्यूरेशन, जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। और सर 5 डेज की वीक क्लास होगी, हाँ और वीकेंड हमारा ऑफ होगा, ठीक है, जैसे कि पहले भी हमारे पास ठीक हुई था। ठीक। सर यहाँ पे महानूर मुनीर हैं, इनका क्वेश्चन ले लें। आई एम अ मदर ऑफ 2 kids एंड आई हैव टू फेस डिफिकल्टी टू कम्युनिकेट विद माई किड्स टीचर इन फ्लुएंट इंग्लिश। I want to ask, where should I see myself after completing this course? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स वो अपने आप को समझे कि वो इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे, वो जाके अपने बच्चों की करेक्शन करेंगे, और बल्कि बन के वो टीचरों की भी करेक्शन कर देंगे, यहाँ पे टीचर गलत कर रही है। जी सर। सर ये ये हमारा बड़े जो स्टैंडर्ड स्कूल का होते हैं, जैसे सिटी स्कूल, बीकन हाउस, यहाँ पे और तो मैम ये वीकेंड एज अ ट्रेनर रहा हूँ, और जाता भी हूँ ट्रेनिंग में टीचर्स को, इशू कोई नहीं है इसमें। एक्चुअली जो लैंग्वेज है उसमें, देखिए आपने एक बंदे जिनसे आप लैंग्वेज सीख रहे हैं,
तो क्या करना उन्होंने, वो जो जितनी उनको आती है सिर्फ उतनी सिखानी है उन्होंने, जो नॉन प्रोफेशनल है, जो जिनकी फील्ड स्पेशलाइज्ड आपकी फील्ड के अंदर है, उन्होंने नई से नई चीज आपको सिखानी है ताकि वो आप अपडेट रहें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी कि अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियड आपने यस काम सर, करना है। माशाल्लाह सर, मैं तो काफी अच्छा आपसे इन तो टच हूँ और उसके मैं लिए देख रही हूँ कि माशाल्लाह आप कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज हमने ओरिएंटेशन क्लास स्पेसिफिकली कंडक्ट किया है कि हम इस कोर्स से रिलेटेड और आपकी जो एक अप्रोच है उससे रिलेटेड सब पार्टिसिपेंट्स को बता सकें। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दी जाएगी। यहाँ पे अरूज इम्तियाज हैं, इन्होंने चैट में लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन सर, आई हैव अ क्वेश्चन, आई एम अ प्रोफेशनल one but can't hold on English, so I step back in many big achievements. How do you help us in a concise manner? अब कंसाइज मैनर सर कितना हो सकता है कि ये अपनी अचीवमेंट, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को हासिल कर सकें, कितना कंसाइज कर सकते हैं? 3 मंथ तो हमने आपको कर दिए। नहीं, एक्चुअली बात पता क्या है, ये एक बात समझने वाली बात है जो लोगों को समझ नहीं आ रही आज तक। मैं, क्योंकि मैं कोर्स एक लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, चाइनीज भी पढ़ाता हूँ, जर्मन पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आइल्स पढ़ाता हूँ, लिंगो पीटी, मेरी फील्ड ही लैंग्वेज है। मैंने लैंग्वेज की फील्ड में, मैं एक मिसाल देता हूँ, एक मिसाल देने लगो, बड़ा अच्छे से समझिएगा सारे बच्चे जो सुन रहे हैं मुझे। ब्रूसली था ना, ब्रूसली, चाइना का है ना, वर्ल्ड चैंपियन बना 1966 में। उसको जब बीबीसी न्यूज ने पूछा, भाई आप, जर्नलिस्ट ने पूछा आप वर्ल्ड चैंपियन कैसे बने हो, तो उसने कहा कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था, किंग स्कूल में चाइना के अंदर, तो मेरे जो टीचर थे, जब वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर या बुक्स के ऊपर थीरीज पढ़ाते ना किक मारने की, तो हमें एक किक के बारे में ना तकरीबन 50 या 100 थीरी पढ़ाते थे कि इस किक को ऐसे भी मारे, ऐसे मारा जा सकता है। ठीक है, किसी किक के बारे में हमें हजार हजार थ्योरी भी पढ़नी पड़ती थी। तो कहता बच्चे थ्योरियां पढ़ते रहते थे, मैं पता करता, मैं एक थ्योरी पढ़ता था ना, तो मैं हजार दफा उसके ऊपर प्रैक्टिस करता था, ना कि मैं हजार थ्योरी पढ़ता था। तो मैं वर्ल्ड चैंपियन बन चुका हूँ। तो लैंग्वेज के मैदान में भी एक ऐसा मैं ट्रिक बताता हूँ आपको कि हमें एक चीज, एक लफ्ज सीख कर उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ गो, गो एक वर्ड है, जाना डेली यूज करते हो आप लोग। अब यहाँ पे गो का जो हमने सिर्फ एक ही इस्तेमाल किया आज तक, आई गो टू स्कूल, लेकिन यहाँ पे तो गलत बात। अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं कहने लगूँ दिस इज अ गुड गो, दिस इज अ गुड गो। अब यहाँ पे गो का मीनिंग ही चेंज है। यहाँ पे मीनिंग है ये एक अच्छी कोशिश है। फिर मैं कहता हूँ नाउ इट इज योर गो, और यहाँ पे भी गो का मीनिंग चेंज है। यहाँ पे इसका मतलब अब आपकी बारी है। लफ्ज तो एक है लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं की इसके ऊपर ज्यादा, तो हमें लैंग्वेज आती नहीं है। हम लैंग्वेज को की जो कंटेक्चुअली हम लैंग्वेज को समझ नहीं पाते फिर सियाको सुबह के बल से। तो ये प्रॉब्लम है, हम ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, ज्यादा 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 इंग्लिश के मतलब बड़े बड़े मैगजीन न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं या बुक्स पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस बड़ी थोड़ी करते हैं। हमें एक दो लफ्ज सीख कर, एक दो सेंटेंस सीख कर उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग कि हमारी प्रैक्टिस कम होती है? हाँ, प्रैक्टिस कम होती है हमारी। हम कहते हैं कि हमें लैंग्वेज नहीं आ रही, हम पीछे जा रहे हैं, हम गोल को अचीव करना चाह रहे हैं लेकिन पीछे जा रहे हैं, लेकिन हम उसके ऊपर लैंग्वेज डिमांड करती है प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू कैन बी। यस सर। जी सर यहाँ पर एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मारूश, जी मारूशा का, कि सर आई एम स्पीकिंग इंग्लिश विद माय किड सिंस he born but he can't speak only can understand. What will you give me suggestions? मैं I'm not asking about time. Okay, अरूज, ठीक है वो क्या, सर, ये पहले मारूश। नहीं नहीं, वो ये कह रही है कि मैं बच्चे जब से मेरे, मैं उनसे इंग्लिश में बात करती लेकिन वो मेरी बात समझ नहीं पाते। नहीं, वो समझ तो रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं रहे इंग्लिश इनके साथ। नहीं नहीं, वो बोले बच्चे, देखे, अगर आप कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, अब मैं हूं ना, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं अपने घर में बच्चों के साथ समटाइम जर्मन बोलता हूँ, बच्चे मेरे से जर्मन बोलते हैं। अब अगर आप बच्चे के साथ टॉक कर रहे हैं इंग्लिश में, बच्चा सुन रहा है, बच्चा उस तरह वर्ड को नहीं बोल रहा आपके साथ, इट मीन्स कि आप प्रॉपर मुस्तकिल तौर पर नहीं बोल रहे हो। आप शॉर्ट बोलते हो, कभी बोलते हो उर्दू, कभी बोलते इंग्लिश। यहाँ तो एक ही मीडियम रखो ना, टोटली इंग्लिश बोले, बोलेगा बच्चा, दूसरे दिन बोलनी शुरू कर देगा, वो सुनेगा और बोलेगा।
वो सुनेगा और बोलेगा। यहाँ पर ये है कि आप वो जब बाहर निकलता है घर से, तो दूसरे बच्चों से मिलता है, वो पंजाबी उर्दू बोल रहे होते हैं, वो सारा उसका माइंड स्ट्रक्चर खराब। या घर में और बंदे जो वो भी उर्दू बोल रहे हैं, वो इंग्लिश बोल रहे हैं, इस तरह बच्चा डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो यहाँ तो एक मीडियम रखकर यहाँ पर इसका हल एक ये भी है कि आप बच्चे को ऊपर इस तरह इंग्लिश ना उससे टॉक करें। आप बच्चे को अंग्रेजी जो ना वैसे पढ़ाएं, बेसिक्स, उसको बेसिक्स पढ़ाएं इंग्लिश की, उसको फॉर्म ऑफ वर्ब्स याद करवाएं इंग्लिश की। ठीक है, उसको प्रोनाउन याद कराएं। इसमें मी, आई, माई, मी, वी, अवर, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट इज, देयर, देम। उसको हेल्पिंग वर्ब्स याद करवाएं। उसके बाद बच्चे के साथ छोटे छोटे जुमले बोलें। जो बच्चा छोटे जुमले बोलेंगे वो फिर बच्चा अंडरस्टैंडिंग करना शुरू कर देगा। ये इसका हाल है। बाकी इसके अलावा तो सर, ये डॉक्टर अरोज हमारे साथ हैं। ये अपना जो क्वेश्चन है मैं चाहती हूँ ये खुद आपसे पूछ रहे हैं। डॉक्टर अरोज, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। जी प्लीज आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी हियर। हेलो। सर अनम्यूट तो उन्होंने किया है, लेकिन शायद उनकी तरफ कोई प्रॉब्लम है। वो कह रही हैं कि आई एम नॉट आस्किंग अबाउट टाइम बट स्किल्ड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। वो कंसाइज मैनर का जो मैंने कहा था ना। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला जो बच्चा स्टूडेंट यहाँ पे टच करेगा, हमें जो लैंग्वेज कोर्स करेगा, वो याद करेगा लाइफ पूरी। हमारा जो वास्ता है अच्छे टीचर से पढ़ा है। ठीक है। ये सर बच्चे जो जितने भी साथ इंशाल्लाह। कनेक्टेड होंगे वो फील करेंगे, रियलाइज करेंगे कि वाकई हमें लैंग्वेज की कुछ चीजें मिल रही हैं। अब हमें लैंग्वेज का आइडिया, लैंग्वेज होती है क्या, सीखनी कैसे है। ये एक स्किल है बहुत बड़ी। मैं ये बार बार ये बात कह रहा हूँ कि टॉकिंग इंग्लिश इट्स अ बिग स्किल। इंग्लिश को बोलना एक बहुत बड़ी स्किल है। अभी आपके सामने वो जो पता नहीं मैम थी कश्मीर की। जी, तौसीम इंडिया से। हाँ, तो वो बात कर रही थी ना, देखा उनका, उन्होंने प्रैक्टिस की, उन्होंने सुना, बार बार प्रैक्टिस की, उनका एक्सेंट अच्छा था माशाल्लाह। और वो बोल भी अच्छा रही थी। मुझे वॉइस के बारे से चाह रही थी, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। वॉइस छोड़ दिया उन्होंने करते करते। ठीक है। तो बाकी ये कि ये बस जो भी कनेक्टेड होगा वो खुद ही रियलाइज करेगा वाकई ये लैंग्वेज कोर्स हो रहा है यहाँ पे। ये कोई यानी कि कोई मजाक या कोई फन नहीं हो रहा। ये एक अच्छा यानी कि ना, आपको बकायदा नोट्स सेंड किए जाएंगे, आपको बकायदा एक्टिविटीज दी जाएंगी, आपको बकायदा ग्रामर के रूल्स पढ़ाए जाएंगे। उसके ऊपर एक रूल के ऊपर आपको कह लो 20 एग्जाम्पल्स दी जाएंगी डिफरेंट तरीकों के साथ, विद इंग्लिश विद उर्दू दोनों ट्रांसलेशन के साथ। इंग्लिश भी होगी, नीचे उर्दू भी दी जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं। सर ऐसा भी होता है कि चूंकि माशाल्लाह मेरे काफी कोर्सेज आते रहते हैं, मैंने अक्सर देखा कि कोर्स शुरू में तो बहुत हाई स्पिरिट के साथ शुरू होता है, लेकिन स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता बीच में अपना इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। और एनवायरनमेंट वैसा नहीं रहता। वो सारी बात आपने हालांकि कवर कर भी ली कि ये इंस्ट्रक्टर की तरफ से ही होता है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो 3 महीने का अरसा होगा स्टूडेंट्स का आपके साथ, तो ये डे 1 से लास्ट डे तक इसकी यानी कि हमारी लर्निंग उसमें इजाफा ही होगा ना इंशाल्लाह। डेफिनेटली। क्या आपको मैं कह रहा हूँ 70 रूल्स माइंड में रख लेना। 70 इंग्लिश ग्रामर रूल्स जब तक आप पढ़ेंगे नहीं मुझसे, तब तक आपका ये कोर्स ही नहीं खत्म होगा। सर ये ठीक है। रूल्स उसके आप लोग खुद बनाए हैं या आप किससे हेल्प ले रहे हैं मैंने कोई? नहीं नहीं, ये मैंने बताते मेरा एक लॉन्ग लाइफ एक्सपीरियंस है ना, जो पढ़ाने का, टीचिंग एक्सपीरियंस का। ठीक, ठीक है, माशा। उसके अंदर मैंने वो ऑब्जर्वेशन सारी के लाइफ में ऐसे, ठीक है, ये चीजें आए तो लैंग्वेज इस रूल का कितने परसेंट यूज करता है इंसान कन्वर्सेशन में, इसका कितने परसेंट है, इसका कितने परसेंट है। कुछ ऐसे रूल्स भी हैं जो हमारे यूज नहीं होते, बच्चे उसके ऊपर फोकस करते, बच्चे के ऊपर कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। ठीक है। तो ये चीजें हैं, इंशाल्लाह अच्छे कवर हो जाएंगे। अच्छा मैम, अब मैं ना एक्चुअली क्लास को कवर करते हैं हम। जी जी जरूर। जी ठीक है टाइम फिर। इज टू मच हियर। तो ठीक है सर, इंशाल्लाह बहुत टुमारो। शुक्रिया। बहुत जरूरी थी ओरिएंटेशन क्लास होना, क्योंकि आपका कोर्स तो मैं लॉन्च कर चुकी हूँ, आर्ट्स का भी और स्पोकन इंग्लिश का भी, और आपसे मैं काफी अरसे से कनेक्टेड भी हूँ। ये बड़ा नो जरूरी प्रॉब्लम है। एट ऑल। जी। You तो just आप ग्रुप में say the जी। students come here and just learn without any problem.
जी, कोई भी क्वेश्चन है आप ये इंग्लिश एंथुसियास्टिक ग्रुप में सर से पूछ सकते हैं, उनको टैग करके। वहाँ पे वो हर टाइम अवेलेबल हैं, आपको जैसे उनको वक्त मिलता है दिन में वो आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी और तमाम पार्टिसिपेंट का जिन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।